बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है डेट नाउ अ सिली मिस्टेक इज नो लॉन्गर ए सिली मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लंडर। और अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर लाइटर वे में बोलूँ और आप लोगों की भी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो एक मार्क आपके फ्यूचर हनीमून को स्विट्जरलैंड से शिफ्ट कर देगा नैनीताल में, एंड अनदर 1 मार्क लेस विल देन शिफ्ट योर हनीमून फ्रॉम नैनीताल टू अ लोकल प्लेस लाइक खंडाला एंड लोनावला। हेलो एवरीवन, आई एम गगन लड्डा. Now for all those who are preparing for GATE 2019, I know many questions are bubbling in your mind. How should I start my preparation? What should be the key areas to focus on? What should be my approach to start any subject, to study any subject? Should I focus more on theoretical part or on objective part? Should I join any coaching institute or I should do it by self-study, and so on? You have many questions in your mind. Now how do I know this? Because from last few days my inbox is filled with all such questions. So in this particular video I am going to answer all such questions. I am going to tell you many tips, many tricks which will help you to prepare for GATE 2019 in a better way and help you secure All India rank under 50. So just be with me till the end of this video and I guarantee that this video is going to be very, very helpful for you people. So the very first thing, students, is the contents, the resources, what to study, or I should rather say what not to study, because that actually is more important than what to study. So students, you have more than 40-45 subjects in 4 years of your engineering, और उसमें से अगर हम कुछ मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स हटा भी दें, देन यू हैव ऑलमोस्ट 25 to 30 सब्जेक्ट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उसको फिर हम कई सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके सिंगल सब्जेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात करूं, देन strength of material part 1 and part 2 are taken as one subject. Thermodynamics along with IC engine along with power plant is taken as one subject. Then metal cutting along with metrology, then manufacturing process part 1 and part 2 along with material science, all this comes under production. So इस तरीके से भी अगर हम उसको डिवाइड करें, then you have almost 10 to 11 subjects which is actually equivalent to 25 to 30 subjects of your BE. Okay, so all these 25 to 30 subjects of the BE which you have studied throughout 4 years, you have to study in this single year, and not only you have to study, you have to revise it so that you can recall it on the single day on those 3 hours. So is it possible कि जिस अप्रोच से आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ा है, जो कंटेंट्स आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरे पढ़े हैं, क्या वही कंटेंट्स हमको इसमें लगेंगे? Obviously not possible. You must have the customized contents for such competitive exams, otherwise it is not possible to crack any such exams. Okay, so very first thing is that you should have the right content, right resources from where you are studying. Otherwise होगा क्या कि आप unnecessary stuffs ज़्यादा अगर पढ़ लेंगे, then finally you will be frustrated and finally you will leave this preparation like most of the people do. More than 90% of students just leave their preparation before appearing for GATE exam. Okay, so first thing, you must have the right contents. Now from where do we have the right contents? So if you have joined any coaching institutes, from there you can have the right contents. If you have not joined, or if you are planning for the self preparation, then at least you should have the notes of some coaching institutes. From there you can have the contents and you can go through those contents. So what actually is the role of such institutes or a good teacher or a good guidance? Because students generally ये सवाल पूछते हैं that sir, is it necessary to join any coaching institute or we can crack it through self preparation? Definitely every exam can be cracked with self preparation, but what is the role of a good institute or a good teacher? Let us understand this. This mechanical engineering or any engineering is like a sea, and you have to take the pulse out of it so that you can make the necklace out of it. So a role of a good institute or a good teacher is that they will provide you with the pulse. आपके पास वो pulse available रहेंगे, then only you just have to make the necklace. उसके बाद वो आपके skills पे, आपके hard work पे depend करता है कि आप उसका कितना अच्छा necklace बना सकते हैं. Because competition nowadays has grown too vast. बहुत ज़्यादा competition आज की डेट में है. ऐसा ना हो कि जिस टाइम में दूसरे लोग पर्ल्स, उनके पास ऑलरेडी पर्ल्स हैं, वो लोग नेकलेस बनाने में लगे हैं, उस टाइम में आप समुद्र में गोता लगा रहे हैं कि मुझे पर्ल्स मिल जाए, पर्ल्स मिल जाए.
Okay, so having the right content is very very important, as I am saying again and again. So even if you are preparing by yourself, you are doing suppose self preparation, then also you must have at least the notes of the institutes, or the better option would be for you to have the video lectures. Many video lectures, many e-learning courses are now available. You can have a look, you can have the sample videos on the YouTube, and you can have any of such video lecture course. उससे होगा क्या, फर्स्ट थिंग यू विल गेट द कंटेंट्स, यू विल गेट द राइट कंटेंट्स टू स्टडी, एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल गेट द कंसेप्ट्स, यू विल गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर फ्रॉम दोज वीडियो लेक्चर्स. अदरवाइज उन्हीं कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए हमको वी विल हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, हमको टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पड़ेगा, एंड इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम. So better would be to have the video lectures and have your concepts clear. And as I always say, three things are very essential to crack such exams, what we call as CAT. C for concept, A for accuracy, and T for timing. These three things are very very essential. Concepts is very essential. GATE is all about basics. GATE is all about concepts. Okay, GATE is not an exam which tests your memory. ये कोई memory test वाली exam नहीं है. This tests your intelligence. This test your basics, how clearly you understand some subjects. And what is a concept? Concept क्या है? To know the why part of anything is nothing but concept. कोई भी चीज़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना, उसका फिजिकल एप्लीकेशन जानना, दैट इज नथिंग बट कंसेप्ट. If you have seen some of my videos recently, I have posted the video of buy and see. If you have not seen it, I will give you the link, you can see that video. So once you understand the concept of that, in that I have told you about the buy and force and what actually is the magnitude of buy and force, that is equal to rho g into v. So once you understand the concept of that buy and see, first thing you will get interest in that subject. Because until and unless you get interest in your subjects, you will not be able to study for long hours, because ultimately finally you will have to study for up to 10 to 12 hours after few months from now. Okay, so जब तक आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, it will not be possible for you to have such a long sitting. First thing. Second thing, once you understand the things with concepts, then उसके बाद फिर आप उस चीज़ को भूलते नहीं हैं. Okay, there I told you the concept of buoyancy, how buoyant force, how can we derive buoyant force, what is the magnitude of that buoyant force, and once you understand that, you will never forget that buoyant force or buoyancy. Similarly, one more concept we deal in strength of materials. If you have studied about the beams, you have seen the beams. The beams are always rectangular in shape and not circular in shape. ज़्यादातर जो beams हम देखते हैं, those all are rectangular in shape. What is the reason behind that? I mean, the beams can be circular as well, but beams are always rectangular shape. Now the reason lies in the same bending formula which we have already studied. E by R is equal to M by I is equal to sigma by Y, or you can say sigma is equal to M by I into Y, or you can say sigma is equal to M by Z, where Z is section modulus, which is equal to I by Y. Okay, now one thing you can see from this formula, sigma is equal to M by Z. More is the value of Z, less will be the stress, and more strong the beam would be. Z की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेस उतनी ही कम होगी, और वो बीम उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी. ओके, नाउ Z की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? The value of Z for rectangular section is more than that of the circular section. That's why rectangular beam is more strong than that of the circular beam. Now, why is it that for rectangular section modulus is more? Section modulus, as we know, Z is equal to I by Y, where I is moment of inertia, or you can call it as second moment of area. Moment of inertia is nothing but second moment of area. Second moment of area means the area जिसका जितने न्यूट्रल एक्सिस से जितने दूर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, that beam will have more I and more Z. So as you can see, the rectangular section has area distributed more area distributed away from the neutral axis as compared to the circular section. Circular section में जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस के दूर जा रहे हैं, एरिया जो है वो उसका कम होते जा रहा है, बट रेक्टेंगुलर में कांस्टेंट है. Okay, therefore rectangular beam is much stronger than that of the circular beam. And more stronger beam would be of I section, because in I section, as you can see, the more of the area is distributed at ends. ओके, तो ऑब्वियसली घरों में आई सेक्शन बीम्स फिजिबल नहीं है लगाना, बट जो हैवी कंस्ट्रक्शंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, यहाँ सब जगह अगर आप देखेंगे, देन दैट इज आई सेक्शन बीम. ओके, सो सिंपल थिंग्स रहती है, सिंपल चीज़ें रहती है, सिंपल से कंसेप्ट्स रहते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन द इंजीनियरिंग बिकम्स प्ले फॉर यू. एक तरह का गेम बन जाता है, एंड यू स्टार्ट प्लेइंग विथ इंजीनियरिंग. और इस तरह से पढ़ने से होता क्या है? वेरी फर्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू, कि इसमें इंटरेस्ट आता है, हमको सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है.
एंड सेकेंड थिंग, उस चीज़ को आप कभी भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे? सपोज आई हैव टोल्ड यू दैट आई सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम। आप यहाँ से बाहर गए, यू सी सम ब्रिज, और उसमें आपने देख ली आई सेक्शन की ब्रिज, आई सेक्शन की बीम। ओके, आपके दिमाग में हिट हो गया। यू आर ट्रेवलिंग समवेयर थ्रू ट्रेन एंड यू हैव सीन द ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक, द सेक्शन ऑफ दोज ट्रैक इज आई सेक्शन। अगेन वो दिमाग में हिट हो गया। बायंसी का जैसे मैंने बताया, वेर एवर यू आर गोइंग, इफ यू आर सीइंग अ शिप फ्लोटिंग ऑन द सी लेवल, दैट कंसेप्ट ऑफ बायंसी विल हिट टू योर माइंड। ओके, सो इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो वो कभी भी हम भूल नहीं सकते उस कंसेप्ट को। आगे से आगे हमको वो कंसेप्ट याद आते रहते हैं। डेरिवेशन का एक बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर डेरिवेशन करें कि नहीं करें। डेरिवेशन डेफिनेटली हमको करना चाहिए, डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, एक तो वो कंसेप्ट क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है, एंड सेकेंड थिंग, जब तक आप किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ पर करना है वो चीज़ आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि डेरिवेशन पूरा रटा जाए, पूरा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक ऐसे पार्ट जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले जो पार्ट रहते हैं उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, बट उस डेरिवेशन की जो बेसिक थीम है वो आपको पकड़ में आनी चाहिए, वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप उसके फॉर्मूले को सही तरीके से सही जगह में अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट स्टार्ट विथ सम बेसिक सब्जेक्ट एंड देन गो टू द एप्लीकेशन पार्ट। डायरेक्टली एप्लीकेशन पार्ट के सब्जेक्ट्स में जंप नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैकेनिकल का ही एग्जाम्पल दूँ, देन यू हैव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, दीज आर बेसिक सब्जेक्ट। देन मशीन डिजाइन इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अनटिल एंड अनलेस आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं समझेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मशीन डिजाइन। आप उसको रट लें, आप उसको पास कर लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ मशीन डिजाइन। Thermodynamics is a basic subject. Then you have power plant engineering, IC engine, then refrigeration, air conditioning. These all are application of thermodynamics. Fluid mechanics is a basic subject. Then you have heat transfer, which is an application of both thermodynamics as well as fluid mechanics. So first start your preparation with the basic subjects. Just go through all the concepts. Now once you have understood the concept of any particular topic of the subject, then just start solving the questions. उसमें के questions निकालिए प्रीवियस 25 ईयर्स के गेट के, IES के, IAS के, और जितने भी PSU एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसरो, बार्क, जितने क्वेश्चंस आपको मिल सके उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस निकालिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. When you have gone through the lectures or when you have gone through the notes of that particular topic, start making your own notes. साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलिए, मेन पॉइंट्स उसके साथ साथ में लिखते चलिए, उसके फॉर्मूलेज सारे लिखते चलिए. Once that is over, then just go through all the formulas and start solving the questions. Now you will find that many questions you can do it very easily. बहुत सारे questions ऐसे रहेंगे जो simple formula based है, simple concepts वाले हैं, वो आप बहुत easily कर लेंगे. You will find many more questions which will require some effort, some of your energy. तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं, जस्ट टिक दोज क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस को आप टिक करते चलिए. जो फॉर्मूलेज उन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं उसको आप अलग से एक शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए, और उन क्वेश्चंस को टिक करके फिर आगे जब आप रिवीजन करेंगे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है. अदरवाइज पूरे क्वेश्चंस हम देखते हैं, इट इज़ जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स. तो जो क्वेश्चंस आपसे आज एक बार में बन रहे हैं, डेफिनेटली वो आपसे कल भी एक बार में बन जाएंगे वंस यू गो थ्रू योर नोट्स. ओके, सो ज़रूरी क्या है, जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं उनको टिक करके रखिए, और फिर उनको आप जब रिविजन के टाइम जब आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, सो इस तरीके से एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलिए, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलिए. एंड इफ़ यू वांट यू कैन हैव 2 subjects in parallel, but don't make it more than 2 subjects. At least 2 subject, at most 2 subject आप parallel में कर सकते हैं. And once those subjects are over, suppose your subject A is over and then you are starting subject B, let's suppose. तो most important thing is that कि आपको subject A को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है. Keep on revising subject A. बिकॉज नाउ इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आप हार्डली रोज़ का अगर आधा एक घंटा भी अगर आप रोज़ का सब्जेक्ट ए में देते हैं थोड़े थोड़े, और बहुत ज़्यादा आपको उसमें कुछ करना भी नहीं है, आपने पूरे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड वेल. नाउ उसमें करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पहले नहीं बन रहे थे, स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, या कोई एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम निकाल लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, या फिर उस सब्जेक्ट के टेस्ट दे दिए. ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, वो कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होते जाएंगे. अदरवाइज क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं फिर उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, देन वी स्टार्ट अदर सब्जेक्ट, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ के देन वी स्टार्ट थर्ड सब्जेक्ट. तो ऐसा क्या होता है, फिर एट द एंड हम ऐसा लगता है कि पहले वाले सब्जेक्ट्स तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है.
ओके, सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर स्टार्टिंग सेकंड सब्जेक्ट, देन कीप ऑन रिवाइजिंग सब्जेक्ट फर्स्ट, एंड देन यू आर स्टार्टिंग थर्ड सब्जेक्ट, देन कीप ऑन रिवाइजिंग सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड. नाउ सब्जेक्ट फर्स्ट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, सब्जेक्ट सेकंड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, सब्जेक्ट वन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. सिंपली आप उसका कोई भी एक टेस्ट पेपर निकालिए, तो पहले फॉर्मूलाज पूरा पढ़िए और उसको सॉल्व कर लीजिए, हार्डली आधे एक घंटे का वो काम रहेगा. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, especially nowadays, because competition इतना ज़्यादा बढ़ गया है that now a silly mistake is no longer a silly mistake, it is a blunder. I will tell you the reason. I will just give you example of my students only. Okay, one of my student, he got around 81 marks, 80.65 marks to be more precise, and he got all India rank, and all India rank 410. And another student who got just 1 mark less, he got 80 mark, 79.64 marks to be more precise, and his all India rank was 508. Just a difference of 1 mark and a difference of all India rank 100. Can you imagine? Now another student, he got total marks as 84.7 marks, and his all India rank was 143, with just 4 marks difference, again a huge difference of around 270 rank. Okay, so you can see here just 1 mark difference. एक mark आपको PSU से IITs में ला सकता है. Another 1 mark will take you from even lower IITs. Another 1 mark will take you from IITs to NITs. और अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर लाइटर वे में बोलूँ और आप लोगों के भी लैंग्वेज में बोलूँ, तो वो 1 मार्क आपके फ्यूचर हनीमून को स्विट्जरलैंड से शिफ्ट कर देगा नैनीताल में, and another 1 mark less will then shift your honeymoon from Nainital to a local place like Khandala and Lonavala. Okay, so it is not just 1 mark now. It is very very important that you must focus on your accuracy. And before making this video, yesterday I was talking to my students who scored very well in this exam, and I was trying to draw the pattern out of their preparation, because सबकी जो circumstances थी अलग थी. Some were preparing along with job, कुछ लोग जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोग कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोग पूरी तरह से फुल टाइम डेडिकेट किए थे ड्रॉप लेके. ओके, सो एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन circumstances. So I was trying to find out some common pattern, and very easily I found that pattern, and I would like to share that pattern with you. And few common things which everyone did was, the very first thing was they were all able to complete the syllabus on time, well on time. Around October November में सबने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, एंड फॉर दिस आवर वीडियो लेक्चर्स हेल्प देम अ लॉट, बिकॉज उनको एक सही कंटेंट्स मिल गए, प्लस एक सही कंसेप्ट उनको उन वीडियो लेक्चर से मिले. अदरवाइज दे वुड हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, तो वो चीज़ उन्होंने अवॉइड की. दे रेफर द वीडियो लेक्चर्स, दे क्लियर देयर कंसेप्ट्स, एंड दे कंप्लीट द सिलेबस वेरी अर्ली. और सेम चीज़ अगर कोई क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू करता है, देन द सिलेबस कंप्लीट्स ऑलमोस्ट ऑन दिसंबर एंड जनवरी. काफ़ी लेट सिलेबस कंप्लीट होता है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास रिविजन के लिए नहीं रह पाता. सो दिस वॉज एन एडेड एडवांटेज फॉर देम दैट दे मैनेज टू कंप्लीट द सिलेबस वेरी वेल ऑन टाइम. एंड वंस दे हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, along with revision they started giving test. उन्होंने बहुत ज़्यादा, जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट मुझे मिला होगा जिसने कहा होगा कि सर मैंने टेस्ट नहीं दिया. उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दी, एटलीस्ट 50 टेस्ट उन्होंने अटैम्प्ट की. किसी ने 100 टेस्ट, किसी ने 125, 150 टेस्ट तक सबने अटैम्प्ट किए. ओके, तो जितना ज़्यादा आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जितनी ज़्यादा आप फुल लेंथ मॉक गेट देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. ओके, एंड दिस एक्यूरेसी इज एक्चुअली एन अ हैबिट. ये ऐसा नहीं है कि आपके कल एग्जाम है और आप आज सोच के जा रहे हैं कि यार मैं कल जाके सब एक्यूरेट कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, दिस शुड बी इम्पार्टेड इन योर हैबिट फ्रॉम डे 1 ओनली. सबसे पहले दिन से आपकी हैबिट में ये आनी चाहिए. जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट की, एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस कंप्लीट. पूरा कंप्लीट करिए उसको, एंड तक आंसर तक लेके आइए, एंड देन उसका आंसर मार्क कीजिए. ओके, एंड वेन एवर यू गिव टेस्ट, उसके बाद उस टेस्ट की एनालिसिस पार्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एक एनालिसिस करिए कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ रही है, उस मिस्टेक्स की, उस एनालिसिस पार्ट की एक अलग से कॉपी बनाइए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आप टेस्ट दे रहे हैं, उन टेस्ट में जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है, उन मिस्टेक्स की अलग से कॉपी बनाइए. ओके, सो बिकॉज आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ ये चीज़ सुन के, दैट आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट अराउंड 81 मार्क्स इन दिस एग्जाम.
this year, and I was talking ki what was his test series performance. So he told me that just before 2 months of exam, when he started giving test series, he was just getting 20-25 marks, not more than that. And I was very strange, I was very much surprised by this. And फिर उसने कहा कि सर मैं धीरे धीरे बस इम्प्रूव करते गया उसको, एंड एट द एंड जो मैंने आखिरी टेस्ट दी उसमें अराउंड मेरे 75 to 80 मार्क्स आ रहे थे, एंड विच वॉज अगेन द केस जिसके जो उसके 80 मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में ही आए हैं. ओके, सो ये जो टॉप करते हैं या दोज हु स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द गेट एग्जाम, दे आर नॉट द गॉडली लाइक पीपल. कोई ये अलग से अलग प्लैनेट से नहीं आए रहते हैं. इनकी भी वही मिस्टेक होती है जो हमारी सबकी होती है. डिफरेंस बस इतना होता है कि ये उस मिस्टेक को पहले भांप जाते हैं, उस मिस्टेक पे पहले काम करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग टेस्ट, और हम उन मिस्टेक्स को लास्ट में एग्जाम के टाइम करते हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड एन नॉट सो सक्सेसफुल स्टूडेंट. ओके, सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हो दो. ओके, एंड इफ़ पॉसिबल जो प्रीवियस ईयर गेट के जो पेपर्स हैं उसको भी एज अ टेस्ट आप सॉल्व करो. प्रीवियस ईयर गेट के पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, और उसमें जो मिस्टेक्स आपकी हो रही है उसको आप लिख के रखो, एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग दोज मिस्टेक्स. और धीरे धीरे करके कब आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, यू विल नॉट रियलाइज दैट थिंग. ओके, सो गिव मोर फोकस ऑन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूरी है. एंड थर्ड थिंग इज टाइमिंग. टाइमिंग पे शुरू के लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. इनिशियल लेवल पे जस्ट फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, एंड स्लोली द टाइमिंग आपकी जो है वो आ जाएगी. जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपको एक आइडिया आएगी किस तरीके से हमको टेस्ट अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करना है, कौन सा पार्ट हमको छोड़ना है. ओके, स्लोली यू विल गेट दिस आइडिया. सो एज आई सेड, एटलीस्ट 50 टेस्ट, कम से कम 50 टेस्ट, हो सके तो 100 टेस्ट, 125 टेस्ट, हो सके तो 2 से 3 इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. ओके, और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो रही है पहले तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करिए, एंड वंस 50 और 60% ऑफ योर प्रिपरेशन इज ओवर, कम से कम 60% प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, देन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट. और जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है ये गेट का, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया है बट दे वर अनएबल टू डू वेरी वेल इन द प्रीवियस एग्जाम, देन आई वुड सजेस्ट कि आप डे 1 से ही आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए. ओके, आपका ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स एंड स्टार्ट गिविंग द टेस्ट. और उस टेस्ट के बाद फिर उससे रिवर्स प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए. ओके, टेस्ट आप रिवीजन के टाइम जब आप टेस्ट देते हैं, देन स्टार्ट रिवर्स प्रिपरेशन फ्रॉम द टेस्ट. आपने टेस्ट दिया, उसमें से देखे कौन कौन से कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, देन राइट डाउन दोज मिस्टेक्स, राइट डाउन दोज कंसेप्ट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग दोज कंसेप्ट्स. Okay, so this is the only thing how you can score very well in such exams. This is one way to improve the timing by giving more and more online test series. Second very important thing to improve timing is to know some shortcut tricks. Okay, because the process with which you are solving the questions in university exam, that will not help you in such competitive exams. यहाँ आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है. You just have to solve the questions within 2 or 3 lines. That's it. अगर आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्यूशन कोई भी 2 या 3 लाइन से ऊपर जा रहा है, डेट मीन्स आपकी अप्रोच उसमें गलत है. ओके, आई हैव गिवन यू मैनी सच शॉर्टकट ट्रिक्स. यू हैव सीन माय वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज, आई विल गिव यू द लिंक हियर एंड यू कैन सी दोज वीडियोज and do watch those videos, and you will come to know that the questions which has otherwise very lengthy approach, that can be solved within 10 to 15 to 20 seconds of the time. So this will save a lot of your time. So with this I will conclude this video. We will not discuss whole timetable in this video. I will make another video for that timetable, and in next video, which will be again very important video for you, I will tell you how to study. किस तरीके से पढ़ा जाए. जो आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं बट इंटरेस्ट नहीं आता, बोर होता है, नींद आने लगती है. ओके, सो हाउ टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स, और किस तरीके से आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए. क्योंकि आज दिन तक सबने हमको ये बताया, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बट आज तक किसी ने हमको ये नहीं बताया कि वो मन आखिर लगता कैसे है. तो पढ़ाई में कैसे मन लगे, हाउ यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, how you can study in a better way so that you can remember it for the long time. All these things we will discuss in the next video. और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं उस वीडियो में उसके आंसर मिले, then just write it in the comment box below and I will try to answer all your questions. Till then,
Thank you so much. All the best. So if you like this video, just hit like button below, subscribe to our channel along with bell icon to get regular notifications of our video. If you want more subject related videos, you can download our free mobile application Gate Lectures for Mechanical. You can have complete course of mechanical engineering from our website www.sngateacademy.com. So all the best, stay motivated. Thank you so much.